Very good morning to all of you. Last time we have covered thyroid gland. Yesterday I have sent you the PDF of thyroid gland. Okay, got it? So please go through that PDF as soon as possible. Sorry for delay of the PDF because वो recording और file laptop से लेना रह गया था. ठीक है? So please go through the details today itself of thyroid gland if you have not read that PDF yesterday. ठीक है. So आगे जाते हैं. We'll be talking about the parathyroid gland. Am I audible to all of you? Is my voice clear? Okay. So parathyroid gland. How many parathyroid glands are there total? 4 parathyroid glands are present, isn't it? 1 minute. Toolbar. हाँ, so मैंने आपको सिखाया था थायराइड ग्लैंड, बराबर? थायराइड ग्लैंड where it is located below the larynx and it has how many lobes? 2 lobes are there, बराबर? 2 lobes are present of thyroid gland. तो ये एक लोब है थायराइड ग्लैंड का और ये दूसरा लोब है थायराइड ग्लैंड का, बराबर? एंड बीच में ये जो कनेक्शन है दो लोब को जुड़ने वाला दैट इज isthmus. ठीक है? एंड ओवर दिस lobes are there, these lobes are there of parathyroid gland. So how many parathyroid gland? 4 parathyroid gland. Pair of parathyroid glands are present over the each lobe of the thyroid gland. ठीक है? Got it? So right and left thyroid gland के ऊपर डॉर्सली आपको क्या दिखाई देगा? पैराथायरॉइड ग्लैंड. ठीक है? So this is the location which I have explained you now. These are the lobes of the thyroid gland over which these dorsally arranged parathyroid glands are present and this is the isthmus. Okay, got it? ये हम लोग ने सब लेबलिंग पहले भी देखा है. ठीक है? So what is this labeling? Thyroid gland. Thyroid gland. Okay, your left is right of the diagram. So this will be right thyroid gland and this is the left thyroid gland. ठीक है? And these are the parathyroid glands. Pair of parathyroid. Parathyroid gland. ठीक है? And this one is the connective tissue which is connecting the two glands, which is known as isthmus. Isthmus. Okay. Now, we'll see the exact location of this parathyroid gland. तो मैंने सिखाया आपको, एक मिनट है. So each lobe of the thyroid has one pair of parathyroids. ठीक है? And how is the origin? What is the origin? Endodermal in origin. मैंने आपको बोला origin याद रखना है, function याद रखना है, location याद रखना है glands का. ठीक है? And which is the hormone which is produced by these glands?
parathyroid hormone, which is also known as parathormone, antagonistic to thyrocalcitonin, or else simply it is also known as calcitonin. Okay, calcitonin क्या करता है? Who will tell me what is the role of calcitonin or thyrocalcitonin? What is the role of thyrocalcitonin? We have studied that. ब्लड डीमिनरलाइजेशन नहीं नेहा, उल्टा करता है ना वो. कैल्शियम जो एक्सेस है ब्लड में वो बोन में डिपॉजिट करता है. ओके, व्हेन द ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस, it deposits the calcium in the form of calcium phosphate in the bones. Okay, so remember this, Chitra and then Chelsea, Rutuja, right? ठीक है, समझा? So exactly अपोजिट करेगा ये. अपोजिट करेगा मीन्स नेहा आप जो बोले वो अभी होगा. पैराथॉर्मोन का वो रोल है. एग्जैक्टली अपोजिट व्हाट इट विल डू, ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम है तो बोन में का कैल्शियम ब्लड में डिपॉजिट होगा. बराबर, मीन्स बोन का जो कैल्शियम ओसिन में रहता है इट विल गेट डिसॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा एंड दस ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने का काम करेगा पैराथायरॉइड ग्लैंड. ओके, बाय प्रोड्यूसिंग पैराथॉर्मोन. पैराथॉर्मोन विल increase the blood calcium level by bringing about demineralization. Okay, और भी बहुत सारा काम करेगा. कैल्शियम और कहाँ से मिलेगा? कैन यू गेस? डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना whatever food we have, okay, it is digested properly and whatever calcium which is there it will be absorbed at faster rate. Okay, ये पैराथॉर्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा more absorption of calcium ions from the digestive tract, but indirectly by stimulating one hormone that is calcitriol. Calcitriol is the active form of vitamin D. वो पहले विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा. ओके, विटामिन डी इज calciferol, okay, which will get converted into active form that is calcitriol, and calcitriol will act over the small intestine walls for maximum absorption of calcium. तो absorption of calcium होगा ज्यादा तो ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा. तो दो तरीके से उसने इंक्रीज किया ब्लड में कैल्शियम पैराथॉर्मोन ने. कैसे? फर्स्टली बाय डीमिनरलाइजेशन और सेकंड मैंने बोला इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एक्टिवेटिंग द विटामिन डी that is calciferol to calcitriol, and calcitriol will then act over the digestive tract and increase absorption of calcium ions. ठीक है, ये करता है. तो ऐसे कैल्शियम आयंस बढ़ेगा बॉडी में. So let's study further few more details about this. So what is the origin? Ectodermal in origin. सी है फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन जो कि मैंने अभी अभी बोला. बोन में का कैल्शियम किधर जा रहा है? ब्लड में जा रहा है. ठीक है, so what is happening? कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज हो रहा है. ब्लड में इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब वो क्या करेगा? दस इट इज इन्वॉल्व इन हाइपर कैल्सीमिया. हाइपर कैल्सीमिया, तो उसको हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन भी बोलते हैं. रिमेम्बर, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैराथॉर्मोन, parathormone is also known as calcemic hormone. ठीक है, याद रखो ये. देन डीमिनरलाइजेशन करवाता है. हाउ? डीमिनरलाइजेशन कैसे होगा? अभी कैल्शियम फॉस्फेट विच इज प्रेजेंट इन द बोन्स, बराबर, इट इज
it has to be dissolved in the blood. So there are three actually cells in the blood. Okay, blood में 3 cells रहते हैं. Which are those? Osteocytes, osteoblast, okay, and osteoclast. Okay, got it? So bone में इतने सारे cells रहते हैं, bone cells. ठीक है, उसमें से osteocytes which are there, they are inactive. Osteoblasts are active and they are involved in deposition of calcium phosphate. Calcium phosphate deposit करता है bone के matrix में, that is ओसिन में. And osteoclasts are the phagocytic bone cells. Phagocytic bone cells. Okay, so phagocytosis से क्या हो जाएगा? There will be destruction of the osteoblast and whatever calcium which is stored in the bones will get dissolved in the blood. Okay, so phagocytic action, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? Bone eaters भी बोलते हैं. Osteoclast is also known as bone eaters. Bone eaters, because they are dissolving the calcium which is present in the bones. So all of you understood bone cells कौन-कौन से रहते हैं? Osteocytes, osteoblasts and osteoclasts, which are phagocytic bone cells. Thus they will be involved. So which of these cells will be involved in increasing calcium in the blood? Osteoclasts, which are phagocytic in nature. समझ में आया? Now we'll see what exactly happens when there is hyposecretion and hypersecretion of this. Demineralization of bones, right नेहा? Demineralization होगा तो बोन में का जो कैल्शियम है वो ब्लड में जाएगा और ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, बराबर? तो बोन में का कैल्शियम कैसे इंक्रीज होगा, ब्लड में कैसे जाएगा? बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स. ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो डिसॉल्व करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को और ऑस्टियोसाइट्स को, और उसमें का जो कैल्शियम रहता है वो ब्लड में एंटर होगा. ठीक है, so this is the indication wherein यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया में क्या हो रहा है? That is decalcification of the bones is taking place. Okay, decalcification in the sense calcium which is there in the blood is getting bone is getting entered into the blood, and hypocalcemia, calcification of the bones will take place. Okay, so hyposecretion के time, if there is hyposecretion of the parathormone, okay, parathormone, hyposecretion हुआ तो definitely क्या हो जाएगा? Calcium level जो है it will decrease. Okay, got it? What will happen? उल्टा हो जाएगा, ब्लड में का कैल्शियम ज्यादा बोन में एंटर हो जाएगा एंड ब्लड में बहुत ही कम लेवल कैल्शियम रहेगा. So blood calcium level will fall because of that. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? It will increase blood calcium level. Okay, so what will happen exactly? Can you tell me? Hypoparathyroidism, hypoparathyroidism, or else if there is less secretion, ये तो confirm हो जाएगा, that is blood calcium level will fall. ओके अगर कैल्शियम लेवल फॉल हो गया ब्लड में तो मसल्स को कैल्शियम मिलेगा क्या अच्छे से फंक्शन करने के लिए?
नहीं, मसल्स को कैल्शियम नहीं मिलेगा एंड देयर विल बी प्रॉब्लम इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ओके, व्हिच विल रिजल्ट इन मस्कुलर स्पैज्म। तो मस्कुलर स्पैज्म्स होंगे, नर्व कंडक्शन भी बराबर नहीं होगा बिकॉज कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं जब भी नर्व इम्पल्स पास होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू another neuron. Okay, so there will be no proper impulse transmission also. Okay, so nerve conduction will be affected, muscle contraction will also be affected because of hypocalcemia. Okay, that is less secretion of parathormone, less secretion of parathormone. ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना है बिकॉज मसल्स का आपने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि देर इज अ मूवमेंट ऑफ द आई बैंड ओवर द ए बैंड, बराबर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसके लिए कैल्शियम जरूरी है टू ओपन द मास्ड एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन, ठीक है, सो दैट मायोसिन विल फॉर्म बॉन्ड विथ द एक्टिन। ओके, ये लोकोमोशन चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो कैल्शियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, so there will be no proper muscle contraction. When there is no proper muscle contraction, the term is known as muscular spasm, so it will result in muscular spasm, ठीक है। then आपको पता है glottis, glottis is the opening which is guarded by epiglottis. Okay, so epiglottis which is there will be no proper opening and closing of the epiglottis, and because of which food may enter in the trachea when we swallow the food and person may die because of that. Okay, समझ में आया? तो ये भी एक पॉइंट है। एग्जैक्टली उल्टा हाइपर सिक्रीशन में, हाइपर सिक्रीशन में कैल्शियम तो बहुत ज्यादा है ब्लड में, बहुत ज्यादा कैल्शियम रहेगा। क्यों हो सकता है वैसे बहुत ज्यादा? बिकॉज पैराथॉर्मोन में आइदर कैंसरस सेल्स डेवलप हो गए हैं, इसलिए। ओके, मीन्स व्हेन देयर इज ट्यूमर, ट्यूमर ट्यूमर टू पैराथायरॉइड ग्लैंड, ओके, एट दैट टाइम ज्यादा वो फंक्शन करेगा, ज्यादा फंक्शन करेगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कैल्शियम जो बोन में का है वो ब्लड में एंटर होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच बोन्स क्या हो जाएंगे, बोन्स विल बिकम ब्रिटल, ब्रिटल एंड पोरस। ओके, तो पोरस हो जाएंगे वो, सो विच विल लीड टू osteoporosis, osteoporosis. Okay, osteoporosis means there will be weakening of the bones and pores will be developed over the bones because of excess demineralization. ये demineralization ज्यादा हो रहा है। Okay, more demineralization, ठीक है। So calcium from the bone enters in the blood, thus bone becomes soft, elastic, brittle and weak. ओके, समझ में आया? वेट अ मिनट, स्क्रीन दिख रहा है ना बराबर से? और क्या होगा मोर डीमिनरलाइजेशन की वजह से? और क्या हो सकता है? जो एक्सेस कैल्शियम है ब्लड में, दैट विल गेट डिपॉजिटेड इन द ऑर्गन्स, स्पेशली किडनी, किडनी में डिपॉजिट होगा, गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होगा। ओके, किडनी में डिपॉजिट हुआ तो आपको पता है किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स में मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट, बराबर, सो किडनी स्टोन्स फॉर्म होंगे उसकी वजह से। समझ में आया? Yes, weakening of the bone, Chelsea, right. So person will be prone to
very often fractures if there is minor injury to any of the long bones of our body. ठीक है, so easily fracture हो जाएगा वो region bone because of hypercalcemia. Calcemia it is I'm sorry, calcemia, and calcemia is potassium का deficiency हुआ तो hypocalcemia, potassium का deficiency हुआ. ठीक है, यहाँ पे हम लोग लर्न कर रहे हैं हाइपोकैल्सीमिया वेरिन कैल्शियम का लेवल कम रहता है. रिमेंबर द टर्म्स. ठीक है, I'll just say this. So parathormone, as I told you, what are the different roles? ये roles दिया है यहाँ पे. Role of parathyroid hormone. Roles or functions of parathormone. Okay. So यहाँ पे देखो ये जो parathormone है, how it increases the calcium level. As I told you, it induces reabsorption of more of calcium from the renal tubule as well as reabsorption of calcium from the guts. Okay, calcium renal tubule में कहाँ से absorb होगा? From DCT, especially DCT. Okay, because DCT shows facultative और conditional reabsorption. Okay, ये मैंने सिखाया था एक excretion chapter में. So conditional reabsorption in the sense by order given by the hormone. When the hormone increases, when this hormone increases, then only calcium ion reabsorption will increase in the renal tubule. Okay, so DCT functioning is altogether depending upon the order given by the hormones. Okay, got it? So especially DCT. DCT भी absorb करेगा, but more of the calcium ions will be absorbed from the DCT, which shows conditional absorption or facultative absorption. ठीक है, then gut region में absorb होगा, small intestine में से calcium ज़्यादा absorb होगा, but how? By activating the inactive vitamin D. So vitamin D is in inactive form in our body, that is calcitriol. विटामिन डी कौन बनाता है? कैल्सीफेरॉल. कैल्सीफेरॉल जो है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ vitamin D है, which is produced by the kidney. Okay, got it? Which will get activated and it will get converted into calcitriol. Okay, so calcitriol में conversion किसकी वजह से होता है? Conversion of calciferol, vitamin D, that is calciferol, to calcitriol is because of पैराथॉर्मोन. ओके, पैराथॉर्मोन के एक्टिविटी के कारण दिस इनएक्टिव फॉर्म which is produced by the kidney, it is converted into active form. ठीक है, and now this calcitriol will act over the gut wall. Okay, it will act over the gut wall and then it will increase absorption. ओके, एब्जॉर्प्शन करवाएगा वो, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विल इंक्रीज. समझ में आया? एंड लाइकवाइज ब्लड कैल्शियम लेवल विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट. समझा है? दो रोल्स हम लोग ने स्टडी किए, फर्स्ट एंड सेकेंड रोल.
So whatever I have explained you, it's given here in this chart. See, calcitriol. Calcitriol, what is the other name for chemical composition of calcitriol? 1,2,5 dihydroxy vitamin D. Okay, means two hydroxyl groups are getting attached to the first and 25th 2 and 2,5. Okay, 2,5 चाहिए यहाँ पे. 1,2,5 carbon atoms. Okay, 2,5 एक मिनट. 1 to 25 means first carbon atom and 25th carbon atom के ऊपर hydroxyl group join होगा, means two hydroxyl groups will be joined. ठीक है? So this is what is the function of the parathormone. And then this I have already explained you. What is the disorder? Disorder क्या क्या है? Disorder of parathormone. So see here, hypoparathyroidism and second is hyperparathyroidism. Hypoparathyroidism अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम लेवल जो ब्लड में है वो कम हो जाएगा. ओके, बिकॉज डीमिनरलाइजेशन कम हो जाएगा. बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्सीमिया. Okay, muscular spasm क्यों होगा? Because there are no sufficient calcium ions to unmask the active side of the actin. So actin myosin bonding बराबर से नहीं होगा and there will be no proper contraction of the muscles. Then it also affects the conduction of the nerve impulse. So nerve impulse का conduction भी affect होगा. Then closure of the glottis is also affected because epiglottis का जो movement है upward and downward, closing and opening of the epiglottis will not be proper and food may enter in the respiratory tract and person may die because of that. ठीक है, ये बात है. And hyperparathyroidism, this I have already discussed. Increased level of calcium level in the blood, ज़्यादा increase हुआ तो it will result into hypercalcemia. Hypercalcemia, ठीक है. इसकी वजह से bones brittle हो जाएंगे. Very often person may be prone to fractures. Okay, osteoporosis से suffer होगा. ब्रिटल हो जाएंगे बोन्स, पोरस हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ मच मोर फंक्शनिंग ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड ड्यू टू ट्यूमरस कंडीशन. ओके, तो ट्यूमरस कंडीशन की वजह से ये हो सकता है. एंड रिमेंबर, पैराथॉर्मोन इज ऑल्सो नोन एज पोलिप्स हार्मोन. और एक बोला था नाम इसका, याद है? पैराथॉर्मोन को क्या बोला था? और एक वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है ना ब्लड में. सो व्हाट इज द अदर नेम फॉर पैराथॉर्मोन? hypercalcemic hormone. Okay, so two different names are there of parathormone. Which I'll mention here. Parathormone is also known as hypercalcemic hormone or polyp hormone. Polyp because scientist Polyp has discovered this hormone. Okay, in year 1925. 1925 में. ओके, पोलिप नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था, इसीलिए पोलिप्स हार्मोन ऐसे बोला है.
हाइपर सिक्रेशन, हाइपर मीन्स ज्यादा, ज्यादा सिक्रेशन हो गया पैराथॉर्मोन का। तो पैराथॉर्मोन का काम क्या है? व्हाट इट डज, इट ब्रिंग्स अबाउट डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। तो डीमिनरलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा बोन्स का, डीमिनरलाइजेशन ज्यादा हुआ तो सॉफ्ट हो जाएंगे बोन्स एंड दे विल बिकम ब्रिटल। Why? Because osteoclast cells जो रहते हैं bones में, which are bone eaters or else phagocytic cells, will destroy the osteoblast cells and osteocytes. Okay, because of which जो ओसिन में कैल्शियम था, that calcium will get entered in the blood in large quantity. तो ज्यादा बोन का डिसोल्यूशन हो रहा है, बोन का ज्यादा डिसोल्यूशन हुआ तो बोन डेफिनेटली ब्रिटल हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा एंड सॉफ्ट हो जाएगा एंड prone to fractures. Understood, Rutuja? Okay. So this is all about the parathyroid gland. So we have finished with the parathyroid gland. Now we'll start with another gland, that is adrenal gland. Wait, I'll open another file. Okay, before I open that another file, I would like to firstly tell you the general information of the adrenal gland. One. Okay, so let's study about the adrenal gland. Adrenal gland, which is there, it is also known as supra suprarenal gland. Suprarenal gland, because renal is the word for kidney and supra means above. These glands which are there, these are present above the kidney. Okay, for example, supposing this is one kidney and this is another kidney, right? Okay, so over the kidney, these pear-shaped glands are located. Okay, so these glands which are there, these are suprarenal glands. Okay, then what is the main thing? Adrenal gland को दूसरा नाम है, commonly it is known as emergency gland.
जैसे कि हाइपोथैलेमस को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला है, वैसे यहाँ पे इसको बोला है इमरजेंसी ग्लैंड, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इमरजेंसी हॉर्मोन्स such as adrenaline, okay, during stress conditions and all. And during stress condition, one stress compact hormone is also produced by the adrenal gland, that is glucocorticoids. Okay, that's why adrenal gland, which is there, it is known as emergency gland. To manage the stress condition, this gland is involved in stress condition. Okay, to increase the heart rate, increase the respiratory rate, pulse rate and all. ठीक है? Then pupil dilation. All these are the roles of adrenaline, which is a stress hormone or emergency hormone. Okay. Now we'll study origin of this gland. Origin. Origin मैंने क्या बोला, विच जर्म लेयर से वो अराइज होता है. जैसे कि हम लोग ने स्टडी किया था पैराथायरॉइड ग्लैंड. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड विच आई टोल्ड यू? एनीबडी हु कैन रिमेंबर, रिकलेक्ट? एंडोडर्मल इन ओरिजिन, बराबर. इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन है. ओके, सपोजिंग दिस इज द मॉडिफाइड बिगर वन, बिगर ग्लैंड. यही ग्लैंड जो है वो मैंने मैग्नीफाई किया. ठीक है. इट हैज टू रीजन्स. वन इज एड्रिनल cortex, okay, and another one is adrenal medulla. okay, so इनर वाला कौन सा है? इनर रीजन is adrenal medulla, and adrenal cortex which is there, it is the outer region. Outer region. Okay, got it. So origin of this gland is from the two germ layers. Okay, two germ layers. मेसोडर्म से जो अराइज होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन is adrenal cortex. Okay, so adrenal cortex which is there, it originates from mesoderm. Okay, so mesodermal in origin. एक हो गया mesodermal in origin and दूसरा है ectodermal in origin. Okay, so adrenal medulla originates from ectoderm germ layer. Okay, so can I say these two gland, this gland, adrenal gland which is there, it is dual in origin. It has dual origin. Okay, as it is formed from mesoderm and ectoderm both. ठीक है, गॉट इट. इसीलिए उसको बोला है ड्यूअल इन ओरिजिन. रिमेंबर, ड्यूअल इन ओरिजिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है. दोनों जर्म लेयर से अराइज होता है. और किडनी है नहीं तो कुछ अलग लगेगा आपको. So first point we have cleared, that is origin, and commonly it is known as emergency gland. ठीक है. So any doubts still here? So I'll clear this.
Now we'll talk about in detail कितना परसेंट एड्रिनल कॉर्टेक्स रहता है, कितना परसेंट एड्रिनल मेडुला रहता है, and which are the different regions which are seen in adrenal cortex. Okay, there are no differentiation in the adrenal medulla. Only there is differentiation seen in the adrenal cortex of the adrenal gland. तो क्या डिफरेंशिएशन है, कौन से अलग अलग रीजन्स है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, वो हम लोग स्टडी करेंगे. Then which are the different hormones which are produced by these different layers, that will be learned. Okay, so okay, so adrenal gland each adrenal gland has two parts which differ in their origin, structure and function. Okay, so each adrenal gland has two parts, okay, which are differing in, it differs in origin. हम लोग ने origin का difference देखा, adrenal cortex originates from medulla and adrenal medulla originates from ectoderm. origin का difference, structure जो मैंने बोला, adrenal cortex is divided into three different regions, okay, wherein adrenal medulla is not differentiated. So ये structure का difference हो गया, and functions are also altogether different because adrenal cortex, which is producing hormones, are glucocorticoids, mineral corticoids and sex corticoids. Okay, कौन से बोले, mineralocorticoids, glucocorticoids and sex corticoids. Okay, wherein adrenal medulla दो टाइप के हार्मोन बनाता है, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन. adrenaline and noradrenaline which is produced by adrenal medulla. तो फंक्शन भी अलग हो जाएगा, हॉर्मोन्स अलग अलग बना रहे हैं, तो डेफिनेटली फंक्शन विल आल्सो बी डिफरेंट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला. ओके, सो लेट्स सी क्या डिफरेंस है, वो जॉट डाउन करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट पार्ट दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में लर्न करेंगे. Okay, so first, about light. First क्या है, origin from the mesoderm. So origin का point, it originates from mesoderm. ये point है. Then second, adrenal cortex का region जो रहता है adrenal gland में, it is almost 80%. Okay, so 80% of the gland, it constitute about 80% of the total adrenal gland. ठीक है, then it is the outer part of the adrenal gland, outer part of the adrenal gland. ठीक है, then fourth, adrenal cortex is divided into different regions. Okay, it is divided into three regions. So adrenal cortex is differentiated into three regions. Okay, three regions में वो differentiate हुआ है. First is zona. एक मिनट, ये आगे एक्सटेंड होता है क्या व्हाइट बोर्ड? हेलो स्टूडेंट्स,
एक मिनट. Okay. So zona adrenal cortex which is there, it is differentiated into three regions, that is zona. First one will be zona glomerulosa. Sorry, glomerulosa. Glomerulosa. Okay. Then second will be zona fasciculata. Zona fasciculata. Fasciculata. Fascicu. Okay. Fasciculata. And then last one is zona reticularis. Reticularis. Okay. So three regions are there. Zona glomerulosa. Okay. First is zona glomerulosa. Second is zona fasciculata. And third one, innermost region of the adrenal cortex, that is zona reticulata. So outermost region ये वाला है. Outermost region. ठीक है. And this is the innermost region. ठीक है, समझा. So ये डिफरेंशिएशन है. इतने पॉइंट्स पहले इसका भी डिस्कस कर लेते एंड देन अदर पेज आई टेक, बिकॉज एक पेज में सब नहीं एकोमोडेट होगा. So next region, that is adrenal medulla. Okay. So what is the origin? Who will tell me? चलो इसका बोलो. Origin क्या बोला था इसका? Rest all. आर्या, आशिता, खुशी, प्राची, बोलिए. तीर्था. आज तीर्था आंसर नहीं दे रहे. ओरिजिन. Yes, Niharika, Rutuja, Archana, right. Tirtha, right. Okay. So ectodermal in origin. They are ectodermal in origin. ठीक है. मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है तुम लोग को? हेलो. मेरा हैंडराइटिंग जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है. देन 80% एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो बचा कितना? 100% को 20%. So 20% of the adrenal gland will be of adrenal medulla. ठीक है. Then third, ये outer part था. This will be the inner part. Inner part of the adrenal gland, of the gland. ठीक है. Then fourth point. Fourth point, very easy here. What will be the fourth point?
इनर पार्ट बोल सकते हो ना, तो यू कैन से सेंट्रल पार्ट हियर. ओके, इनर मीन्स सेंट्रल पार्ट, सेंटर में था ना. ऐसे है एड्रिनल ग्लैंड, पेयर शेप, बराबर. तो यहाँ पे ये सेंटर में एड्रिनल मेडुला है. ओके, बोलो. Undifferentiated. So very easy, no differentiation. So no need of remembering any names, isn't it? Not differentiated. Not differentiated into any zones. ठीक है. So यहाँ तक है. So ये सेव कर लेती हूँ. फिर नेक्स्ट पेज पे फिर से ये ड्रॉ कर, ये करना पड़ेगा, स्केच निकालना पड़ेगा. ठीक है. ओके, सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. विच आर द डिफरेंट रीजन्स? अच्छे से एक बार दिमाग में रिवाइज कर लो. एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स. बोलो दिमाग में. जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर रीजन. मिडिल वन जोना fasciculata, innermost zona reticularis. Okay, all these 3 different regions of the adrenal cortex will be producing different hormones. Okay, and the secretion of all these 3 regions of the adrenal cortex is commonly known as corticoids. Corticoids. So corticoids is the common secretions of the overall secretion of the adrenal cortex. So overall secretion of the adrenal cortex को बोलते हैं corticoids. ठीक है. चलो अभी let's see about the different origin of the hormones. एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन और एड्रिनल मेडुला का हार्मोन, केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है उसका और कौन से हार्मोन. ओके, वो डिफरेंस बाकी है. दैट विल राइट इन द नेक्स्ट लाइन. रीजन्स, हार्मोन्स और क्या बोला था मैंने, एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है. सो ये फिर से हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं. आई एम सॉरी, ये कहाँ चला गया लाइन. This was your adrenal cortex. This is adrenal medulla. Okay. So now, और क्या पॉइंट्स बाकी थे रीजन्स का? रीजन्स एंड हॉर्मोन्स, बराबर. सो लेट्स सी which different regions of the adrenal cortex are producing which hormones. Okay, so first was what? Zona glomerulosa, rulosa. Zona rulosa, which is there, it will produce mineralocorticoids. Okay, first region of the adrenal cortex, that is zona glomerulosa, is producing
mineralocorticoids, and most main mineralocorticoid, MC here means mineralocorticoid, is example of main mineralocorticoid is aldosterone. Aldosterone, remember, which brings about, हम लोग ने excretion chapter में पढ़ा था ये renin angiotensin mechanism में. Okay, aldosterone is responsible for reabsorption of sodium ions and water. Okay, and in turn it eliminates K positive ions and phosphate from the urine. Okay, so excretion of the K positive ions and phosphate from the urine is second function of aldosterone. First function, absorption of Na positive and H2O, that is water, to maintain blood volume, blood pressure, blood volume maintain करने के लिए. ठीक है? So, which is the main mineralocorticoid? I told you, aldosterone, which is produced by zona glomerulosa, which is outermost region of the adrenal cortex. Okay. Now, second region. Second region is zona fasciculata. Okay, zona fasciculata is responsible for production of glucocorticoids. Okay, an example, main glucocorticoid. GC here means glucocorticoid. Okay, is main glucocorticoid is cortisol. Okay, cortisol. Remember this. Then third one. Third innermost layer is zona reticularis. Zona reticularis. Okay, which produces, it is producing one hormone, and name of that hormone is gonadocorticoids. Okay, gonadocorticoids, which are also known as sex corticoids, which will act over the gonads, sex organs, ovaries and testes. Okay, then sex corticoids, or else it is also known as androgen. Okay, समझ में आया? So which are the different regions? Zona glomerulosa, which is producing hormone mineralocorticoids. Okay, main mineralocorticoid is aldosterone. Okay, zona fasciculata, which is producing glucocorticoids hormone. Okay, main glucocorticoid is cortisol. Okay, zona reticularis commonly क्या प्रोड्यूस करेगा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, और एल्स एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं उसको, एंड्रोजेंस एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स अदर नेम. ठीक है, इसका मेन वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, इसका दो का आपको याद रखना है. मोस्ट लाइकली क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एग्जाम. ओके, गॉट इट. एंड कॉमन सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी याद रखो, कॉमन सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स मींस ओवरऑल ये तीनों का सिक्रीशन को क्या बोलेंगे? कॉर्टिकॉइड्स. क्या बोलेंगे? कॉर्टिकॉइड्स. कॉमन सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स is known as corticoids. समझा? Then adrenal medulla. Adrenal medulla. Which hormones are produced by adrenal medulla? Adrenaline,
and noradrenaline. Okay, so these are the two hormones which are produced by adrenal medulla. No differentiation of the regions. Okay, ये तो पता है, no regions are there. This we have already written. Then we'll study chemistry of these hormones. So ये जो corticoids है, mineralocorticoids, glucocorticoids and gonadocorticoids, chemically all these hormones which are there, we have studied that it is the hormone which is derived from the amino group. Amino group name, I'm sorry, sterol group. Sterol group. Sterol group means it is steroid hormone. Okay, all these are the steroid hormones. Steroid hormones. Okay, what about the adrenaline and noradrenaline? ये हम लोग ने पहले ही स्टडी किया था. अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड से डिराइव हुए हॉर्मोन्स जो रहते हैं, दोज आर नोन एज अमाइन हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड. ओके, सो अमाइन हॉर्मोन्स से एड्रिनल मेडुला. अंडरस्टूड? ये अमाइन हार्मोन यहाँ लिखना चाहिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे. वेट, आई राइट हियर. अमाइन हार्मोन. तो केमिकल कंपोजिशन समझ में आया? So chemically, adrenaline and noradrenaline are derived from single amino acid. That's why they are known as amine hormones. Wherein chemically, mineralocorticoids, glucocorticoids, and gonadocorticoids, that is, all the corticoids which are there, barabar, all the corticoids of the adrenal cortex are steroid hormones as they are having sterol group. फैटी एसिड से डिराइव होता है ना, लिपिड से डिराइव होता है स्टेरॉइड हार्मोन. समझे? क्लियर है सबको? ओके, सो ये जनरल इंफॉर्मेशन हुआ एड्रिनल ग्लैंड का. नाउ विल स्टडी एग्जैक्टली हाउ द what is the function of the mineralocorticoid, and if there is less secretion of mineralocorticoid, what happens? Hyper secretion की वजह से क्या होता है? Which disorders and which are the different changes which takes place in the body because of hypo and hyper secretion of mineralocorticoids. Then after that we'll be learning about glucocorticoids, their properties and disorders, hypo and hyper secretion, and gonadocorticoids का भी basic learn करेंगे. ठीक है, gonadocorticoids का actually speaking you don't have that much details. समझा? So डाउट्स है क्या कुछ एक्सक्रीशन में? मैंने आपको बोला था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन तक कुछ डाउट है क्या? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन वहां तक मैंने आपको वीडियोस वॉच करने के लिए बोला था. सो हैव यू ऑल वॉच द वीडियोस एंड कुछ डाउट्स है क्या? 10:10 हो गया, 10:30 तक लेक्चर. एक्चुअली आई रिमेम्बर द डाउट सेशन इज देयर, बट कैसे है ना, वो टॉपिक चल रहा था इसलिए बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करना था. बोलो, रेज योर हैंड्स दोज हु आर हैविंग डाउट्स. लास्ट टाइम क्या था वैसे? एक मिनट. नहीं है क्या डाउट? कुछ कंटिन्यू करूं आगे?
बोलिए, बोलो जल्दी. Anybody is having doubt? Raise your hands. Those who are having doubt in excretion chapter till mechanism of urine formation. उसके पहले क्या आता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या किया था हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर मींस एलएस ऑफ किडनी देन excretory system पूरा excretory system that is ureter urinary bladder and all ornithine cycle then mechanism of urine formation में था ultrafiltration selective reabsorption and tubular secretion यहाँ तक मैंने बोला था नहीं है so can I continue with the topic देखो एक बात करते हैं हम लोग सी आपको कुछ भी डाउट रहेगा ना एक्सक्रीशन में अभी नेक्स्ट सैटरडे जो हाफ एन आवर सेशन रहेगा वो स्पेशली फिर वो आपका जो कुछ भी क्वेरी रहेगा आप मुझे पर्सनली सेंड करो यू विल सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप ओके माय नंबर इज देयर विथ यू ऑल तो मुझे वो क्वेश्चंस आप भेज दो मैसेज करो एंड immediately then we'll just clear all the doubts of everything related to excretion तो वो फटाफट हो भी जाएगा because I'll be having your all questions with me so आपके पास 8 दिन है पूरा का पूरा चैप्टर आप देख लो ना 8 दिन में वीडियोस कंप्लीट कर लो वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ excretion डक्ट ऑफ बेलिनी क्या करता है यूरिन लेके जाता है ना duct of Bellini is opening in the minor calyx through renal papilla. Duct of Bellini receives many collecting ducts of nephron. समझा चेल्सी माइनर कैलिक्स में यूरिन जो आता है ना थ्रू डक्ट ऑफ बेलिनी से आता है एंड डक्ट ऑफ बेलिनी जो है ना दैट डक्ट ऑफ बेलिनी विच इज देयर इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू rejoining of many collecting ducts जो है वो join होते हैं and big duct is formed that is duct of Bellini which finally opens in the minor calyx through renal papilla एलएस ऑफ किडनी में है देखो डायग्राम रीनल पैपिला का रीनल पैपिला इज द स्मॉल ओपनिंग ऑफ ईच medullary pyramid okay and it is opening in the minor calyx opens in the major calyx and major calyx is opening in the renal pelvis in turn opens in the ureter okay so this is the conducting pathway of urine okay ठीक है so करे क्या वैसे 8 days I am giving you 7 to 8 days for watching all the videos of excretion और जो कुछ भी questions है you can send me the all questions on the personal number and I'll discuss all the answers of those doubts okay आपका जो कुछ भी query रहेगा वो तो वो फटाफट हो जाएगा overall accepted raise your hands those who want this particular doubt session in this way those who are agreeing with that बाकी बाकी को कुछ क्वेरी नहीं है क्या ठीक है ओके थैंक यू भूलना नहीं है डाउट्स भेजने के लिए लोअर योर हैंड्स नाउ ओके
यहाँ तक समझा सब, एड्रिनल मेडुला एंड ऑल। नाउ टेल मी, कैल्सिट्रियोल क्या है? मैंने क्या बोला था? कैल्सिट्रियोल मीन्स व्हाट? भूल गए क्या? कैल्सिट्रियोल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी एक्टिव फॉर्म कब होता है? when this calcitriol will be formed. कैल्सिट्रियोल कब फॉर्म होता है? पैराथॉर्मोन एक्ट होता है तभी ना। और when the calcium level in the blood decreases at that time, है ना? ठीक है। So I'll open the another presentation. ठीक है, अभी 15 कितना 10:20 हो गया ना, 10 मिनट। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ही करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का करेंगे, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड ऑल। एक मिनट, फाइल है क्या देख दो डाउनलोड। तो स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ, पैराथायराइड का मैं सेंड करूंगी पीडीएफ, डोंट वरी। चलो आगे जाते हैं अभी। इतना तक तो क्लियर है सब, एंड ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड मेनी क्वेश्चंस आल्सो। आज इतना क्वेश्चन नहीं पूछा बट ठीक है। हाँ, सो एडी एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो फंक्शनिंग है वो किसके अंडर है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का, हाँ, ओनली एड्रिनल कॉर्टेक्स, नॉट एड्रिनल मेडुला। ओके,
पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, ये दोनों जो है वो कंट्रोल करते हैं किसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है? रिमेंबर दैट. हाउ इट इज कंट्रोलिंग? It is controlling by production of the releasing and inhibiting hormone. Okay. So look here. Releasing and inhibiting hormone, which we have already learned about the thyroid gland. Okay. Thyroid gland का secretion TSH पे control होता है. वैसे ही यहाँ पे ये जो secretion है इसका adrenal cortex का, okay, that will be controlled by one hormone, that is adrenocorticotropic hormone. Okay, so adrenocorticotropic hormone which is there, it will be produced by the pituitary gland. Pituitary gland produce करता है. How it is producing? Once it receives the message from hypothalamus. Okay, hypothalamus जो है it will produce, it is going to produce corticotropic releasing factor or hormone. Corticotropic releasing factor is produced by the hypothalamus. Okay, and this corticotropic releasing hormone will reach the anterior lobe of the pituitary. So it stimulates which lobe of the pituitary? Anterior lobe of the pituitary, to secrete ACTH, adrenocorticotropic hormone, and thus ACTH will enter the blood and reach towards the adrenal gland. Okay, और जैसे ही वो adrenal gland के पास जाता है, at that time adrenal cortex के hormones जो है वो stimulate हो जाएंगे, depending upon which type of situation is there. अगर electrolyte का imbalance हो गया blood में, मिनरल्स का शॉर्टेज हो गया, Na पॉजिटिव कम हो गया, राइट? तो Na पॉजिटिव का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है mineralocorticoid. So depending upon that, only specific region of the adrenal cortex will get stimulated. Okay, got it? सब region नहीं stimulate होगा, only specific region, depending upon what type of situation and conditions are there in the blood. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लिवर में अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट करना पड़ेगा लिवर सेल्स में, दैट विल बी डन बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स जो है वो गोनाड्स का डेवलपमेंट करवाएंगे. गोनाड्स में स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में करवाएगा, इट विल इंड्यूस oogenesis in ovaries. Okay, got it? So overall proper functioning of the ovaries and testes will be under control of the sex hormone. ठीक है, that is androgens. So specific region will get stimulated at that particular time. Okay, जब भी development करवाना है ovaries का, so which region will get stimulated because of ACTH? ACTH यहाँ पे reach होगा and adrenal cortex get stimulated. बराबर? कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, नॉट होल एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट. टेल मी which region of the adrenal cortex will get stimulated to produce androgens when ACTH reaches here? ACTH stimulates, बराबर, secretion of these hormones. So which region? नहीं, मेरा आवाज आ रहा है, सब दूसरे आप रेंज में आओ. रेस्ट ऑल आर आंसरिंग माय क्वेश्चन. Zona reticularis, right? Yes. So that specific region will get stimulated and thus there will be increase in the level of that particular hormone. Okay, और जैसे ही सोडियम आयंस सपोजिंग कम थे वो ज्यादा हो गया, अभी इनफ है,
So now negative feedback, by negative feedback mechanism, there will be message sent to the hypothalamus that stop production of corticotropic releasing hormone. So corticotropic releasing hormone बंद हो जाएगा प्रोडक्शन उसका. So definitely कैसे बंद हो जाएगा? Because of production of inhibiting hormone. So inhibiting hormone ये produce करने लगेगा hypothalamus and this inhibiting hormone will stop pituitary gland to inhibit pituitary gland to produce ACTH. समझ में आया? So negative feedback से वो control हो जाएगा by production of inhibiting hormone by hypothalamus. Hypothalamus. Understood? ये था सब. And दिव्या आप नहीं थे होल सेशन में. एंड पार्थिव आप भी बहुत लेट आए लेक्चर के लिए. लेक्चर कितना बजे था पता है ना आपको? 9 o'clock, 9 to 10:30. So you're supposed to join the meeting at 9 a.m. not now. दिव्या किधर गई? आउट फिर से, लेफ्ट मीटिंग. ठीक है. सो यहाँ तक रेगुलेशन ऑफ secretion of adrenal cortex that we have learned. Okay, and this is the actual how the adrenal gland looks like. This lighter region is the adrenal cortex and this one is the medulla, which constitute 20%. Adrenal cortex constitute 80%. Suprarenal, above the kidney, one pair of adrenal gland is present. Okay, on anterior part of each kidney. Origin, then these are the layers which we have discussed, and these are the hormones which are produced by the adrenal cortex, steroid hormones. This is the view under the microscope when we take TS of adrenal cortex of adrenal gland. And this capsule which is there, it is for protection purpose of the adrenal gland. Each and every organ has capsule for protection purpose. And remember, capsule is always made up of white fibers, which gives tensile strength and rigidity to the organ. Here spelling mistake, adrenal, RE चाहिए, ठीक है? Many hormones, commonly corticoids. Okay? Corticoids, मैंने बोला ना common नाम क्या है hormones of the adrenal cortex, corticoids बोलते हैं, ठीक है? So how to remember zona glomerulosa produces mineralocorticoids. So glomerulosa में M है, बराबर? Glomerulosa में M है और mineralocorticoid का M. Then zona fasciculata, okay, double C है यहाँ पे, तो ऐसे याद रखो. Glucocorticoids. Glucocorticoids में भी C ज्यादा है ना? Got it? Glucocorticoids. Gluco का C. Then zona reticularis ऐसे ही याद रखना है आपको. Zona reticularis, androgen, sex corticoids. Third you have to remember as it is. Then in the next lecture we'll be learning about the functions of mineralocorticoids. Okay, properties, functions and their disorders. So यहाँ तक अच्छे से आप पढ़ के आना लेक्चर के लिए. Okay. What is the other name for parafollicular cells? जल्दी बोलो, last question. Parafollicular cells को दूसरा नाम क्या है? T cells. Very good. Okay. और मैंने जो मेथड बोला है स्टडी करने का वैसे फॉलो करो. एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, जैसे ही टॉपिक खत्म होता है वैसे उसमें से जो कुछ भी एग्जाम्पल्स है दैट यू हैव टू लर्न. देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम आवर
nodes. ठीक है? Then you have to solve the MCQs based on that particular subtopic. MCQs on your own within 30 minutes, 40 MCQs. This should be your speed. Then only you'll be able to solve the whole questions which are there in the paper, physics, chemistry as well as bio. नहीं तो स्पीड कम हो गया तो क्या फायदा है नॉलेज रह के. Okay, fine students. Here we'll end the meeting and please join the meeting on time, all of you. Thank you. Wait a minute. Archana, Arya, Ashita, Bhavya. भव्य है ना. हाँ. चैत्रा, चेल्सी, जय, खुशी, नेहा, निहारिका, पार्थी, प्राची, ऋतुजा, नेहा. और कोई बाकी है? इसमें से और कोई बाकी है क्या? मैसेज करो जिसका नाम नहीं लिया मैंने. वन मिनट. यश पाटिल. ओके. तीर्था. और कोई? स्नेहा आपका नाम नहीं लिया था ना? एनीबडी लेफ्ट? अटेंडेंस जिसका नहीं मार्क हुआ है and were present. Okay, fine. Thank you, students. Bye.